Hello students, good morning. Students, today is 31st August and students, your chapter 5th was going on. The name of the chapter is fractions. In the last class I have finished question number 6 of mixed bag. Today I want to start the question number 7. Listen carefully. In question number 7 it has been given multiply, give the answer in the lowest terms. Full stop. Cancel the common factors before multiplying the numerator and denominators. बेटा listen, आप लोगों ने एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पढ़ा है, बट इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन हैज बीन गिवन टिल हियर. एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया मल्टीप्लाई गिव द आंसर इन द लोवेस्ट टर्म. ठीक है, देन आप मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकाल देते थे. ठीक है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके. यहाँ क्या दिया है, कैंसल द कॉमन फैक्टर बिफोर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर. इट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं आपको उन्हें कैंसिल करना है. ओके, सो लुक हियर. In A part, the fractions has been given 2/7 into 14/8. So in 2/7, you can see it here. That is your first fraction and that is your second fraction. So beta, first you will cancel the common factors as the question has been given. Question में ये दिया आपको common factors जो है आपके numerator और denominator के, आपको उसे cancel करना है. So look here, how can we cancel it? आप इसमें क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो डिवाइड कर सकते हैं, या एक दूसरे के फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर से दूसरे डिनोमिनेटर में, या एक डिनोमिनेटर से दूसरे के न्यूमरेटर में डिवाइड कर सकते हैं. इट मींस जैसे यहाँ क्या दिया, 2 दिया है, 2 यू नो अबाउट दैट, 2 से जाता है, एंड हियर 8 हैज बीन गिवन, सो 8 भी क्या होता है, 2 से जाता है, तो हियर यू विल कट इट. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ओके, नाउ same thing you will follow in the denominator also. In the first fraction the denominator is 7. 7 say 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14. यानी फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो हियर यू विल राइट 7 1 जा 7, 7 2 जा 18. क्लियर? नाउ you can write the answer clearly. Okay, it means you have find out first you will before the answer you can solve it. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ओके, यानी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तब तक करना है जब तक वो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है. ठीक है, एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ द कॉमन नंबर. यानी ऐसा कोई आप नंबर लोगे जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे. हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकता है, या दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को, यानी क्या आपस में डिवाइड आप कर सकते हो. ओके, so now you can see it in the first fraction numerator is remaining 1 and in the second fraction the numerator is also 1. So 1 into 1 is equal to, so here you will write it here 1 into 1 upon, in the first fraction the denominator is 1 and the second fraction the denominator is 2. So here you will write 1 into 2. Now you can multiply 1 into 1, 1 1 ja 1, 1 into 2, 1 2 ja 2. So 1 upon 2 is your answer. Clear students? आप ये ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में ये आता है कैंसल द कॉमन फैक्टर्स बिफोर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो आप इसे पहले कैंसिल कर सकते हो. करना जरूरी है, कर सकते हो क्या, करना जरूरी है आपको. सो रिमेंबर इट. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन स्टूडेंट्स यू कैन आस्क द क्वेरी विद मी. ओके, नाउ लुक द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. इन बी पार्ट द फ्रैक्शंस हैज बीन गिवन 6/7 into 14. 14 हैज बीन गिवन, इट मींस न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, 1. सो यू कैन राइट इट हियर 1. नाउ यू कैन सी इट, किसी के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर किसी दूसरे फ्रैक्शन का जा सकता है या सेम फ्रैक्शन का जा सकता है. सो यू कैन सी इट, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमारा डिवाइड हो सकता है. हाउ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. आपको बेटा इसी तरह क्रॉस करना है, कट लगाते जाना है. ठीक है, नाउ यू कैन सी इट, रिमेंबर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को आप डिवाइड नहीं कर सकते एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का नंबर जो होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा. आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ही डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, नाउ यू कैन सी इट, इन द फर्स्ट फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज रिमेनिंग 6, इन द सेकंड फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 2. Here into sign has been given, multiplication sign has been given, so here you will put 6 into 2. And in the second fraction you can see it, in the second fraction, in the first fraction the denominator is 1 and in the second fraction the denominator is also 1. So here you will multiply 6 2 ja 12, 1 1 ja 1. So 12 upon 1 is equal to 12. Okay, so that is your
answer. You will write the answer. Answer is equal to 12. I think students आपको समझ में आ रहा होगा. How can you solve it? Okay. Now students, C part I am providing to you in your homework. In C part there are the two fractions 7/3 into 9/14. So ये आपको C part homework में solve करना है. In D part 0 into 6/21 has been given. So ये आपको homework में solve करने हैं C और D. Okay. Now look the E part. In E part the fractions has been given two whole number 1/7 into 14/15. So look here. You can see it here. The first fraction in the whole number. पहला फ्रैक्शन क्या आपका होल नंबर में है. सो आप पहले से कन्वर्ट किस में करोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करते हो? डिनोमिनेटर को आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो. देन जो मल्टीप्लीकेशन आता है आप उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐड कर देते हो. सॉरी, इट मीन 7 into 2 14. 14 plus 1 15. यानी हमने क्या किया? डिनोमिनेटर से होल नंबर वाले नंबर में हमने मल्टीप्लाई किया. जो मल्टीप्लीकेशन आया हमने उसे न्यूमरेटर पर ऐड कर दिया, न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ ऐड कर दिया. सो 7 2 14. 14 plus 1 is equal to 15. 15/7 into 14/5. Sorry, 14/15, not 5. Now you can see it here. In the first fraction the numerator is 15 and in the second fraction the denominator is 15. So it can be easily divisible by 15. So 15 ones are 15. Then again 15 ones are 15. And in the second fraction the numerator is 14 and in the first fraction the denominator is 7. So 7 से आप 14 को डिवाइड कर सकते हो. 7 1 7, 7 2 14. Now you can see it here. In the first fraction the numerator is 1 and in the second fraction the numerator is 2. So here you will write 1 into 2 upon. In the first fraction the denominator is 1 and in the second fraction the denominator is also 1. So 1 into 1. So now you can multiply 2 into 1. 2 ones are 2 upon 1 1 जा 1. So 2 upon 1. So 2 upon 1 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2. So 2 is your answer. You will write the answer. Answer is equal to 2. Clear students? Now students look F part. F part में क्या दिया आपको? 12/28 into 7/3. So here you can see it. You can divide 12 from 3. 3 ones are 3. 3 fours are 12. Then same thing you will follow here. 7 1 जा 7. 7 fours are 28. So now you can see it. 4 ones are 4. Then again 4 ones are 4. So in the numerator आपका नंबर क्या बचा? फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का 1 into. In the second fraction the numerator is 1 and in the first fraction numerator is also 1 and in denominator is also 1 in the second fraction. Okay. So 1 into 1 is equal to 1. Again 1. 1 upon 1 is equal to 1. So that is your answer. You will write the answer. Answer is equal to 1. Clear? Now students look G part. In G part the fractions has been given 8/9 into 3/8. So you can divide it. 8 ones are 8. Then again 8 ones are 8. Now 3 ones are 3 and 3 threes are 9. Okay. So now you can see it in the first fraction the numerator is 1 and in the second fraction the numerator is also 1. So 1 into 1 upon. In the first fraction the denominator is 3 and in the second fraction the denominator is 1 now. Okay. Now you can multiply. 1 into 1 is equal to 1. 3 into 1 is equal to 3. So that is your answer. You will write the answer. Answer is equal to 1/3. बेटा याद रखिएगा, रिमेंबर, अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के लिए आता है तो आप इसी तरह कैंसिल करोगे. ओके. नाउ H part. H part I am providing to you in your homework. In H part the fractions has been given 7/3 into 4/11. I part I will solve. So here you look at 2/9 into 4 whole number 1/2. So look here, how can you solve it? 2/9 as it is into this fraction has been given in the whole number. So पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड करेंगे. मल्टीप्लाई किससे करते हैं? डिनोमिनेटर को होल नंबर से एंड जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर आता है हम उसे न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं. तो 2 4 जा 8. 8 plus 1 9. 9/2 here you will write. Now you can easily cancel. 2 से 2 चला जाएगा, 9 से 9. So 2 1s are 2. Then again 2 1s are 2. Then 9 1 ja 9 and 9 1 ja 9. So in the numerator your both fractions, numerator in the both fraction is 1. So 1 into 1 and same thing will be related from the denominator 1 into 1. So 1 upon 1 is equal to 1. So that is your answer. You will write the answer. Answer is equal to 1. Clear students? Now students, J part I am providing to you in your homework. In J part the fractions has been given one whole number 4/5 into 5/6. Okay, that question you will solve in your homework. Now look the K part. In K part the fractions has been given one whole number 1/6 into 4/6.
7. सो बेटा रिमेंबर, जब भी होल नंबर का कोई भी फ्रैक्शन होता है, सो आप उसे क्या करते हो, पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो. सो नाउ यू विल कन्वर्ट इट. 6 1 जा 6, 6 plus 1 7, 7 upon 6 into second fraction is 4 by 7. So you can divide 7 from 7, 7 1 ja 7, then again 7 1 ja 7. Then 4 and 6 you can divide with the help of the 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6. So now in the first fraction the numerator is 1 into, in the second fraction the numerator is 2 upon, in the first fraction the denominator is 3 and in the second fraction the denominator is 1. Okay, so now you can multiply. 1 into 2 is equal to 2, 3 into 1 is equal to 3. So that is your answer. You will write the answer. Answer is equal to 2 upon 3. Now look the L part. In L part the fraction has been given 5 by 7 into 3 whole number 3 by 20. So 5 by 7 you will note it down as it is into that number given in the whole number. So you will convert it. 20 into 3 is equal to 60. 23 is 60. 60 plus 3 is equal to 63. 63 upon 20. So now students you can see 5 से 20 आपका चला जाएगा. So 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. Then you can see 7 से 63 चला जाएगा. 7 भी चला जाएगा. तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63. So now you can write it in the first fraction. The numerator is 1 into, in the second fraction the numerator is 9 upon, in first fraction the denominator is 1 and in the second fraction the denominator is 4. Okay, so 9 into 1 is equal to 9, 1 ja 9. Then you can see it here, 4 into 1 is equal to 4. Students, you can see it here. Here the numerator is more than the comparison of denominator. So हमने आपको ये पढ़ाया है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, सो दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किस में लिखते हो, होल नंबर में. होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाले नंबर में डिवाइड करते हो. सो लुक हियर, हाउ कैन यू डिवाइड इट टू कन्वर्ट दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू होल नंबर. सो 4 and 9, 4 2s are 8. So 9 minus 8 is equal to 1. So here you will write it 2 whole number 1 by 4. You can write it here 2 whole number 1 by 4. So that is your answer. You can write the answer. Answer is equal to 2 whole number 1 by 4. Clear students? Now students, your question number 7 has been finished. Now look the question number 8. In question number 8 it has been given divide. Okay, and there are the two fractions. First fraction is 3 by 8 divided by 1 by 2. So look here, how can you divide it? I have already taught to you about that type of the division. हमने आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड का डिवीजन हमने एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है. सो ध्यान से सुनिएगा. 3 by 8 इज योर फर्स्ट फ्रैक्शन. हमने आपको बताया डिवाइड को आप डिवाइड नहीं लिखते बल्कि क्या करते हो, यहाँ आप मल्टीप्लाई. एंड डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन दिया होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर हो जाता है एंड डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर. ओके, सो हियर यू कैन सी इट, द फ्रैक्शन हैज बीन गिवन 1 by 2. सो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे सो क्या हो जाएगा 2 by 1. सो स्टूडेंट, एज द क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन ऑल्सो कैंसिल द कॉमन फैक्टर. आप चाहें तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर को आप कैंसिल कर सकते हैं. अगर कैंसिल करेंगे सो ये आपके लिए इजी हो जाएगा. ओके, सो लुक हियर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. सो नाउ यू कैन लुक इट हियर, देयर इज नो अदर कॉमन नंबर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नंबर नहीं है. सो यू कैन multiply here. In the first fraction the numerator is 3, so you can write it here 3 into, in the second fraction the numerator is 1, so you can write here 1 upon, in the first fraction the denominator is 4, you can write 4. In the second fraction the denominator is 1, so you can write it here 1. So 3 into 1, 3 1s are 3. 4 into 1, 4 1s are 4. So 3 upon 4 is your answer. So you can write the answer. Answer is equal to 3 upon 4. Clear students? Now students, B part. In B part the question is 18 divided by 2 by 3. So look here, how can you solve it? 18 डिवीजन के साइन की जगह बेटा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन. एंड 2 by 3 का 3 by 2. सो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, अगर डिनोमिनेटर में किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना दिया हो तो आप उसे क्या मानते हो, 1. ओके, सो नाउ यू कैन सी इट हियर, 2 से 2 में भी डिवाइड हो जाएगा और 18 में भी. सो 2 1s are 2, 2 9s are 18. नाउ नो वन नंबर कैन बी डिवाइड. रिमेंबर बेटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड नहीं करेंगे. ये नहीं कि आप यहाँ कॉमन देखे तो आपका सर आपने ये तो डिवाइड किया नहीं.
ओके, सो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो हियर इन द फर्स्ट फ्रैक्शन द नंबर इज नाउ 9 into, in the second fraction the numerator is 3. Same thing, in the first fraction the denominator is 1 and in the second fraction the denominator is 1. So 9 into 3, 9 3s are 27. 1 into 1 is equal to 1. So 21 upon 7 is equal to 27 upon 1 is equal to 27. So that is your answer. You can write the answer. Answer is equal to 27. Clear, students? Now students, C part. C part I am providing to you in your homework. In C part the question is 21 upon 25 divided by 7 upon 5. So that question you will solve in your homework. Now look the D part. In D part the question is 45 upon 72 divided by 5 by 9. So look here, how can you solve it? Here your first fraction is 45 upon 72. डिवीजन की जगह बेटा आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन इनटू, देन ये फ्रैक्शन जो है हमारा डिवीजन के बाद है, इसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल. सो 5 by 9 का क्या होगा बेटा, 9 by 5. सो नाउ यू कैन कैंसल द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. कॉमन फैक्टर जो भी आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, आप इसको इजिली वे में डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हो. सो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72. ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो डिवाइड 5 से 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. So in the first fraction you can see it, the numerator is only 9 and in the second fraction you can see the numerator is 1. So 9 into 1 upon, in the first fraction the denominator is 8 and in the second fraction the denominator is 1. Okay, so now you can multiply 9 1s are 9 and 8 1s are 8. Now students you can see it has been given in the improper fraction. ये आपका क्या है यहाँ improper fraction में, because numerator is more than the comparison of denominator. और अगर improper fraction में है so हम क्या करते हैं, whole number में convert करते हैं fractions को. Okay, so now you can see it, how can you convert it in the rough column. 8 से आप 9 में डिवाइड करेंगे, 8 1s are 8. So that is your whole number, that is your numerator and that is your denominator. So you can write it here, 1 whole number 1 by 8. So that is your answer. You can write the answer. Answer is equal to 1 whole number 1 by 8. Clear, students? Now look the E part. In E part the question is 12 upon 7 divided by 3. So you can see it here. Here in the numerator there is the 3 and denominator में कोई नंबर नहीं दिया है, so आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, 1. So now you can solve it. 12 by 7 आप 12 by 7 को ऐसे ही नोट करोगे as it is. देन डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन एंड 3 upon 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 upon 3. सो यू कैन सी इट हियर. आप 3 से 12 को डिवाइड कर सकते हो. सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. नाउ नो वन नंबर हैज बीन डिवाइडेड, विल बी डिवाइडेड. सो लुक हियर, हियर द फर्स्ट फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 4 into, here the numerator is 1 and same 7 into 1. So 4 into 1 is equal to 4, 7 into 1 is equal to 7. So 4 upon 7 is your answer. So you can write the answer. Answer is equal to 4 upon 7. Clear? Now students, F part I am providing to you in your homework. The question is in F part, 44 divided by 11 by 4. So that question you will solve in your homework. Okay. Now look the G part. In G part the question is 9 divided by 2 by 3. So look here, how can you solve it? 9 के बेटा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1. Okay. So first fraction is 9 upon 1 and divided by 2 by 3. So here you will write 9 upon 1 into 2 by 3 को आप क्या करोगे बेटा, रेसिप्रोकल करोगे. तो क्या हो जाएगा, 3 by 2. Okay. So now you can see it here. कोई भी नंबर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं होगा. So you can directly solve it here with the help of the multiplication. 9 3s are 27, 2 1s are 2. So you can see it, this is in the improper fraction. So you can convert that fraction into whole number. So look here. In the rough column, 2 and 27. 2 1s are 2. 2 minus 2 is equal to 7. Then 2 minus 2 is equal to nothing. Any cut term cross. So now you can note it down. 7, 2 3s are 6. So 7 minus 6 is equal to 1. So here you can write 13 whole number 1 by 2. So 13 whole number 1 by 2. So that is your answer. You can write the answer. Answer is equal to 13 whole number 1 by 2. Clear, students? Students, H part I am providing to you in your homework. In H part the question is 5 by 6 divided by 2 by 3. So that question you will solve in your homework. Okay. Now look the I part. In I part the question is 1 upon 9 divided by 3 upon 8. So here you can solve it 1 by 9 as it is you have noted down.
into 3/8 को आप रेसिप्रोकल करोगे उसके क्या हो जाएगा बेटा 8/3. So now you can multiply 8 1s are 8, 9 3s are 27. So that is your answer. You can write the answer. Answer is equal to 8/27. Clear? The J part. In J part the question is 9/11 divided by 6. So in 6 there is no denominator. So you can write it here 1. So 9/11 as it is you have noted down. Then into 6/1 का क्या होगा बेटा 1/6. So you can divide it with the help of the 3. 3 2s are 6, 3 3s are 9. So no one number can be divided. So first fraction में numerator हमारा 3 है and second fraction में 1, and in first fraction the denominator is 11 and second fraction the denominator is 2. So 3 1s are 3 and 11 2s are 22. So that is your answer. You can write the answer. Answer is equal to 3/22. Clear students? Look the K part. In K part the question is 4/5 divided by one whole number 1/15. So बेटा पहले आप whole number को improper fraction में convert करोगे. So look here how 4/5 as it is divided by 15 ones are 15, 15 plus 1 16, 16/15. Now you can use the multiplication then reciprocal of the fractions that has been given 16/15. Okay, so 4/5 into 16/15 का बेटा क्या होगा 15/16. So 5 ones are 5, 5 3s are 15, 4 ones are 4, 4 4s are 16. So in the first fraction the numerator is 1, into in the second fraction the numerator is 3. Same thing in the first fraction the denominator is 1 and in the second fraction the denominator is 4. Okay, so 3 into 1 is equal to 3, 4 into 1 is equal to 4. So that is your answer. You can write the answer. Answer is equal to 3/4. Clear? L part I am providing to you in your homework. In L part the question is 14 divided by one whole number 2/5. So that question you will solve in your homework. So students आज की क्लास में इतना ही. Okay.